Hello everyone. Today I have brought complete notes of Hindi chapter Veerangana Chennamma from class 9 Karnataka. Explanation of the same chapter I have already uploaded. You can check out in the playlist. So here the first main is answer the following. Answer in one sentences. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. First question. चेन्नम्मा का जन्म किस वंश में हुआ था? In which dynasty was Chennamma born? Answer. चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में हुआ था. She was born in काकतीय dynasty. Second. चेन्नम्मा का अर्थ क्या है? What is the meaning of चेन्नम्मा? चेन्नम्मा का अर्थ है सुंदर महिला. Meaning of चेन्नम्मा is beautiful woman. Next. कित्तूर कहाँ है? Where is कित्तूर? आंसर. कित्तूर कर्नाटक के बेलगावी जिले में है. कित्तूर इज इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. नेक्स्ट. चेन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ? Whom did चेन्नम्मा मैरी? आंसर. चेन्नम्मा का विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ. She married to राजा मल्लसर्ज. नेक्स्ट. शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किसको गोद लिया था? Who was adopted by शिवलिंग रुद्रसर्ज? आंसर. शिवलिंग रुद्रसर्ज ने अपने संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था. One of his relative गुरुलिंग मल्लसर्ज was adopted by शिवलिंग रुद्रसर्ज. नेक्स्ट. चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने कहाँ बंदी बनाया था? Where was चेन्नम्मा imprisoned by the British? आंसर. चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने बेलहोंगला के दुर्ग में कारागार में बंदी बनाया था. She was imprisoned by the British in the prison of Belhongla, where she was imprisoned in Belhongla. So here answer in one sentence is finished. Now second main is दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए. Answer in 2 to 3 sentences. First is चेन्नम्मा के माता और पिता का नाम लिखिए. Here you have to write the names of चेन्नम्मा's parents. Answer. चेन्नम्मा के माता और पिता का नाम धुल्लप्पा देसाई और पद्मावती था. So her father's name was Dhullappa Desai and mother's name was Padmavati. Then second, चेन्नम्मा को उनके पिता से कौन सी कलाएं प्राप्त हुई थी? Which arts and skills did चेन्नम्मा learn from her father? Answer. चेन्नम्मा को अपने पिता से घुड़सवारी, शास्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं प्राप्त हुई थी. So she learned martial arts such as horse riding, weapon practice and hunting from her father. So what she learned? Horse riding, weapon practice and hunting from her father. Then next, कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए. Write about the prosperity of कित्तूर state. आंसर. कित्तूर राज्य व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था. देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने आते थे. कित्तूर was a famous center of trade. Many traders from India and abroad used to come to the market of Kittur to buy precious diamonds and gems. Okay. Then next is कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण क्या था? What was the reason for the downfall of कित्तूर? आंसर. कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण शिवलिंग रुद्रसर्ज की लापरवाही थी. वे चेन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ा दिया और चाटुकारों से गहरी दोस्ती कर ली थी. So the reason for the downfall of Kittur was the negligence of Shivaling Rudrasarj. He did not listen to the advice of Chennamma and spent his time with unproductive people. He made friendship with time pass people. Okay. Then next question, यल्लभ शेट्टी और वेंकटराव कित्तूर के भेद खोलने क्यों तैयार हो गए? Why did यल्लभ शेट्टी and Venkat Rao agreed to share the secrets of Kittur? So answer. ठाकरे ने यल्लभ शेट्टी और वेंकट राव को लालच दिया कि वह उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देगा, इसलिए वह कित्तूर के भेद खोलने तैयार हो गए. A British officer named Thackeray, he tempted both of them by promising to give half dynasty to each of them.
What he promised? He promised to give half Kittur dynasty to each of them. By hearing this deal, they agreed to share all the secrets of Kittur. Then next, कर्नाटक की जनता के लिए गर्व की बात क्या है? What is a matter of pride to the people of Karnataka? आंसर, कर्नाटक की जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चेन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई. So the matter of pride for the people of Karnataka is that the spark of independence that was first spread by Karnataka's heroine Chennamma later spread all over India. Okay, so here we have finished the second main also, 2-3 line answers. Now next main is Vilom Shabd. Part से चुनकर लिखिए. Here we have to select the antonyms from the chapter and write. So अस्वस्थ, स्वस्थ, कुरूप, सुंदर, देश, विदेश, शत्रुता, मित्रता, बाहर, अंदर, देशभक्त, देशद्रोही, कायर, वीर, पराजय, विजय. The meaning is very simple. Aswasth means unhealthy, healthy, then ugly, beautiful, then home country, foreign country. Shatruta, mitrata means enmity, friendship, then outside, inside. Then Deshbhakt means patriotic and Deshdrohi means terrorist. Then Kayar Veer, coward and brave. Then Parajay means defeat and Vijay victory. Then next main is अन्य लिंग रूप लिखिए. Here you have to write the other gender forms. You have to change the gender and write like Pita, Mata, father, mother, Rani, Raja, queen, king, Putri, Putra, daughter, son. Then Bap, Ma, dad, mom, Dada, Dadi, grandfather, grandmother. Then Sherni, Sher, lioness, lion. So you have to change the gender and write. Then next main is जोड़कर लिखिए, that is match the following. चेन्नम्मा का जन्म सन 1778 में हुआ. चेन्नम्मा was born in the year 1778. Then चेन्नम्मा की कोख से जन्मा पुत्र शिव बसवराज. The son of चेन्नम्मा was शिव बसवराज. Then next, शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु सन 1824 में हुई. Shivaling Rudrasaj died in the year 1824. Then Dalhousie, Governor General. He was the Governor General. Who? Dalhousie. Then Chennamma ki Jeevan Jyoti बुझी सन 1829. She died in the year 1829. It's very easy. Then next main is अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए. Here a sentence will be given. You have to write one word which gives the same meaning for the sentence. One example is given. See, एक से ज़्यादा भाषा जानने वाला, बहुभाषी. The one who knows more than one language is known as multilingual. Okay, like that. सामान खरीदने एवं बेचना. Buying and selling of goods is known as business or trade. Then झूठी प्रशंसा करने वाला, चाटुकार. The one who praises falsely is known as false praiser. Then next, जिनकी कोई संतान न हो. The one who has no children is known as childless. That is निसंतान. Then next, देश के प्रति द्रोह करने वाला. The one who is disloyal towards his country is known as देशद्रोही, is known as terrorist. Then next, जो परिचित ना हो. The one who is not familiar is known as अपरिचित. अपरिचित means unfamiliar. The one who is not familiar. Then last one, स्वयं को समर्पित करना means to dedicate or surrender oneself is known as समर्पण means to dedicate, dedication. Okay. Then next main is पुराने समय में युद्ध करने के लिए तलवार, भाले, तीर कमान आदि शास्त्रास्त्रों का उपयोग होता था. अब आप 3 वाक्यों में लिखिए कि अगर आजकल युद्ध होता है तो किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है. See, in ancient time, if there was a war, they used to fight with swords, arrows, bows, etc. But now in today's generation, if there is a war, then what weapons will be used, that you have to write in 3 sentences.
सो हियर इज द आंसर। आजकल बहुत सारे नए नए तकनीकें आ गई है जिससे युद्ध काफी भयंकर होता है। परमाणु बम, मिसाइल, AK-47, न्यूक्लियर बम आदि जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। कभी कभी रिमोट कंट्रोल द्वारा ड्रोन और हवाई जहाज का भी प्रयोग किया जाता है। यह सारी चीजें हानिकारक है जो पूरे विश्व को तबाह कर देती है। See, nowadays many technologies have come up which are very dangerous, like nuclear bomb, missile, AK-47. These modern equipments are used in the war. Sometimes drones and airplanes are also used by remote control. And all these equipments are quite harmful as they destroy the whole world. So like this you have to write in 3 sentences. Okay. Then next main is कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। Here you have to translate and write in Kannada. Okay, it is given in Hindi. You have to translate and write in Kannada. फर्स्ट वन, कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। See, I will dictate the answer. You note it down. So the answer for the first one is ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. I repeat, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. सेकंड, अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे. ಅಂಗ್ರೇಜರು ದತ್ತುಪುತ್ರನನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಅಂಗ್ರೇಜರು ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. देन नेक्स्ट, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒಳಗೊಳಗೆ ತಯಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ तैयारी शुरू ಮಾಡಿದ್ದಳು. नेक्स्ट, कित्तूर स्वतंत्र राज्य है. कित्तूरू स्वतंत्र राज्य. कित्तूरू स्वतंत्र राज्य. देन नेक्स्ट, ಚೆನ್ನಮ್ಮ के पीछे 2000 योद्धा थे. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ 2000 ಯೋಧರು ಇದ್ದರು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ 2000 ಯೋಧರು ಇದ್ದರು. देन नेक्स्ट, अंग्रेजों को दोबारा हार माननी पड़ी. ಅಂಗ್ರೇಜರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಲವೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಗ್ರೇಜರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಲವೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. I hope you have noted down the answers. Now the next main is इस पाठ में आए हुए सभी पात्रों की सूची बनाइए और उनके बारे में एक एक वाक्य लिखिए. See, in this main you have to make a list of all the characters present in the chapter and have to write one sentence about each. First, चेन्नम्मा. Okay, चेन्नम्मा कर्नाटक की एक वीरांगना थी. She was a brave woman from Karnataka. Then next, धुल्लप्पा देसाई. चेन्नम्मा के पिताजी थे. Who was धुल्लप्पा देसाई? He was father of चेन्नम्मा. So one sentence if you write, that's enough. Then next, राजमल्ल सर्ज. कित्तूर राज्य के राजा और चेन्नम्मा के पति थे. Who was Rajamalla Sarj? He was the king of Kittur and also Chennamma's husband. Then next, रुद्रम्मा. मल्ल सर्ज की पहली पत्नी थी. रुद्रम्मा, she was the first wife of मल्ल सर्ज. Then next, शिवलिंग रुद्र सर्ज. मल्ल सर्ज और रुद्रम्मा के पुत्र और कित्तूर के युवराज थे. Who was शिवलिंग रुद्र सर्ज? He was the son of मल्ल सर्ज and रुद्रम्मा and also prince of कित्तूर. Then next, डालहौजी. अंग्रेज शासन के गवर्नर जनरल थे. डालहौजी, he was governor general of British rule. Then next, येल्लप शेट्टी और वेंकटराव. कित्तूर के 2 देशद्रोही जो थैकरे से दोस्ती की. येल्लप शेट्टी and Venkatrao, they were the 2 terrorists from Kittur who became friend of Thakre. Then next, थैकरे. थैकरे means ठाकरे. अंग्रेज के सेनापति एवं चेन्नम्मा के विरुद्ध चाल चली. He was a British commander and was against चेन्नम्मा.
So like this, you have to write the name of the character and one sentence you have to write about them. So these were the characters that you will see in the chapter. Then the last main is Anurupta. See, Anurupta, in this main, you have to look at the pair. You have to see the relation in the first pair and you have to apply the same relation in the second pair and solve it. Here, Chennamma ke pati Dhulappa Desai. Chennamma's father, who was Chennamma's father? Dhulappa Desai. And Chennamma's mother, Padmavati. Then second, Chennamma ke pati Mallasarj the. Who was the husband of Chennamma? Mallasarj. Then Chennamma ke putra, who was the son of Chennamma? Shiv Basavaraj. Then next, Guru Siddhappa Kushal Diwan. Who was Guru Siddhappa? He was a wise man. And Chenna Basappa, he was a brave warrior. He was Veer Yuddha. He was a brave warrior. Then last one, 1778, Chennamma का जन्म हुआ था. Chennamma was born in the year 1778 and she died in 1829. Chennamma की मृत्यु हुई 1829 को, 1829 को. Okay, so here we have completed the notes of the chapter. I hope it was useful. And if you like this video and if you want more such videos, then do hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you.